Hello students, welcome back to the Sage. So our next question today is, for what value of n are the nth term of the two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 comma dot 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 are equal. मतलब n की कौन सी वैल्यू पे ये दोनों एपीज की सेम वैल्यू आएगी, इक्वल आएगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, इन द फर्स्ट एपी हमें दोनों एपी से हम इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेट कर देंगे. सी हाउ. इन द फर्स्ट एपी ए क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 63. डी क्या है, a2 माइनस a1 दैट इज 65 माइनस 63 दैट इज 2. दैट इज अ कॉमन डिफरेंस. So we use the formula an is equals to a plus n minus 1 d. So from here we will get the first equation. Okay. Now we'll use the second AP. What is the second AP? 3, 10, 17 dot dot dot. So the first term in the second AP will be 3 and the common difference a2 minus a1 that is 10 minus 3 that is 7. So you can write similarly and you can directly write the equation. So it will this is a second equation. Now according to the question, what is given? It is given for what value of n these two APs are equal. So हम उसको equal equate कर देंगे. दोनों AP की जो equation बनी थी उसको equal equate कर देंगे. अब equal equate कर देंगे, देखो unknown quantity जो है, unknown term वो खाली n है. Simply we will solve it out. After solving we will get the value of n that is 30. Okay. Now our next question, it's very simple and little important also. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12. इसमें तीन अलग अलग different terms दिए हुए हैं and you need to calculate the AP. अब AP के लिए देखो क्या चीज important है, common difference, first term and the common difference. सो पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू थर्ड टर्म इज 16, जो दिया है उसी को यूटिलाइज करेंगे. लाइक थर्ड टर्म इज 16, तो a3 इज इक्वल्स टू 16 गिवन है. a3 मतलब a प्लस 2d, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16. एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई. ठीक है, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. Now seventh term exceeds its fifth term by 12. तो a7 is equals to a5 plus 12. According to the question, seventh term exceeds its fifth term by 12. 12 ज्यादा है, तो a7 को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus 6d is equals to a5 को हम कैसे लिखेंगे, a plus 4d plus 12. A से A cancelled. What is left? 6d minus 4d. 2d is equals to 12. d is equals to 12 upon 2, 6. हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6. अब d6 आ गया, इसको हम इसमें पुट करेंगे, a आ जाएगा. नाउ a plus 2 into d क्या है हमारा, 6 is equals to 16, that is a plus 12 is equals to 16, or a is equals to 16 minus 12 that is 4. We got the first term, we got the common difference. अब हम अपना AP बना सकते हैं. कैसे, a a plus d a plus 2d and so on by using the general form. So a is required AP is 4, 4 plus 6 10, 8 4 plus 2 into 6 to 12 plus 4 16 and so. Okay.